रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया. ओके, रिकॉर्डिंग नाउ. ओके नाउ तो आज हम इंट्रोडक्टरी जो सेशन था लास्ट टाइम, जैसे हमने मीट एंड ग्रीट किया था, उसके बाद आज हम पहली बार वो थोड़ा कुछ नया चीज सीखेंगे. तो आज शुरू में श्वेता विल आई थिंक शेयर हर स्क्रीन, एंड उन्होंने उनके पास कुछ मटेरियल है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं. बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें, एंड कुछ कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें, यही सब आज सीखेंगे हम लोग. तो श्वेता, you want to start sharing your screen? Perfect. Okay, let me start. Oh, also एक और बात, while श्वेता is sharing the screen, हम लोग बहुत ही स्लो जाएंगे. हर एक स्लाइड के बाद हम पॉज लेंगे, हम पूछेंगे कि आपको स्लाइड में कुछ दिक्कत हुआ, कि कुछ डाउट है या फिर कुछ क्लियर नहीं हुआ आपको, तो कोई भी टाइम पे आप अनम्यूट करके या फिर हाथ उठा के पूछ सकते हैं. कोई भी स्लाइड में अगर आपको समझ में नहीं आया ठीक से, तो हम डेफिनेटली रिपीट करेंगे. तो कोई टाइम का कोई जल्दबाजी नहीं है. द मेन पॉइंट इज कि आप लोग समझे, आप लोगों को अच्छा लगे, मजा आए. तो डेफिनेटली हमको रोक के अगर डाउट हो पूछने में हेजिटेट मत कीजिएगा. Can you see my screen? I can see the full thing. I can't see the slideshow yet. Okay. Week 1 introduction to astronomy. I can see. Okay. Perfect. एकदम अब सही है. So yeah, no? Okay. So essentially, what I'll do is I will speak in English, but I'll speak very slowly. If you want me to stop and repeat certain things in Hindi, just stop and tell me that you want that to be repeated in Hindi. Okay? Is that okay? Hello? Yes. Perfect. Okay. Okay, good. All right. So first let's get away with some formalities. So there is a WhatsApp group that all of you know about, which is where we are trying to connect the students with each other. So even beyond the scope of this course, students can talk to each other and form a sort of astronomy community within themselves. So it's very, very much encouraged that people interact over the WhatsApp group. This course will be a 12-week course that will be broken down into roughly 2 parts. The first 5-6 classes will be more theory oriented, and the last part will be more hands-on. The last 6 classes will be very okay. So the last one sort of comes. Hi. Okay, the classes will be for an hour and it will be held on Saturday between 1 to 2 at the same time every week for the next 12 weeks. Okay. And तो मैं काम करता हूँ, मैं देवेंद्र जी वाला उसको अभी म्यूट कर दे रहा हूँ. देवेंद्र जी, अगर हम लोग को कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा. मैं अभी के लिए म्यूट कर दे रहा हूँ. Yeah, that would be great. Very good, thank you. And then each class will be recorded and posted on YouTube. Agar if you want to sort of share this video with the rest of the students who would not be able to make it today, like jaise Shashi ji ka situation hai, so please go ahead and share that video with whoever you want, but everything will be recorded, including all the discussions. If there is any concern with regards to this discussion happened, but we don't want this to be posted on YouTube, please write to us and let us know and we'll take care of it. So essentially everything will be recorded. And then at the end of the slide, you have my email ID and Ian's email ID. So if you have to write something to us in private, please go ahead and write to us
in the link. Okay, then so first of all, what is astronomy? Does any of the students in Devendraji's class want to try to answer it? What do they think is astronomy? देवेंद्र जी बताओ बेटा। जी सर मेरा कनेक्शन हो गया था, अभी बोल रहे सर। बताइए एस्ट्रोनॉमी क्या है? व्हाट इज वीडियो बता दो आगे से आगे जल्दी आ। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी में क्या बोल रहे हैं? दो सुन हाँ बोले। Hello. सर ये बोले एस्ट्रोनॉमी में हम ना जो स्काई में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं सर। ये पिक्चर में बोल नहीं पा रहे। हाँ बढ़िया, exactly. Okay. So, all right. So, astronomy is a study that aims at answering broad questions about the universe we live in. So the questions we ask are things like, what is out there in the universe? Shai, can you mute Devendraji for a while because there's an echo coming? Yep, okay, did it. Yep. Thank you. Yeah, so astronomy is a study of the universe, and we ask questions like, what is out there in the universe? What do we know about them? When did the universe start, right? How did a baby universe or like universe look back in the time, and how does it evolve now, right? And then there are also more specific questions like, where do elements come from and stuff like that, right? So it's essentially understanding the universe that we live in. So broadly, astronomy can be classified, the way astronomy is studied today can be categorized into two blocks. One is the observational astronomy, where what you want to do is you want to go out and see these objects or collect data about these objects and analyze this data and understand what you can see or what you can what signals you get from the universe. And then there is another way of studying astronomy, which is a theoretical astronomy, which is mostly you understand what you try to make models and you try to calculate stuff and you try to make a thought experiment and understand how you expect things to be in the universe. It's like you predict how things should be in the universe. So these two are not independent, they go hand in hand. And a lot of people sort of work in the interface of these two, but this is a general broad classification that we have in astronomy. So first of all, let's go on. So what's out there in the universe? Like, what do we expect to see, right? And Shweta, give me a minute. Huh. Excuse me. मेरे बच्चे ने join कर लिया है. I'm just instruct them. Hello, अलका मैम आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? अलका मैम, निधि बेटा बैठ जाइए सारे बच्चे एक जैसे एक जगह, शाबाश, क्विकली. अलका मैम, निधि मैम से कहो ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे इससे, ब्लूटूथ. मोनिका मैम ब्लूटूथ कनेक्ट कर दीजिए निधि मैम का, तो सारे बच्चे इजीली सुन पाएंगे और बाकी का शेयर मैं करूंगी उनको आके. ओके मोनिका मैम, थैंक यू. नाउ श्वेता, so sorry about this. No worries, thank you so much. Okay, so we were at the question of what is out there in the universe. So universe is this vast thing where you have a lot of things. You have galaxies, you have nebulas, you have pulsars, you have black holes, you have stars, you have dust, you have a lot of things, right? Literally, it is the universe. So anything you can possibly think of exists there. So what we are going to do is today,
we will look at a subset of things which I think are very fascinating because they're very dramatic. Okay, so we will look at some of the words that you keep hearing about, things like black holes, things like neutron stars, supermassive black holes at the center of the galaxy. We will study some of these dramatic things that you have in the universe. So what we'll do is we'll start from the end of a star. Okay, so we will begin where the stars begin to die, sort of. Okay, so but before we do that, let's go on with what is a star. So what happens is when the universe was forming, you will have clouds of dust. Okay, anything that is gaseous is what we loosely call as dust when astronomers speak about it. So we have a cloud of dust, and there'll be some turbulence coming out of whatever reason. So there will be some turbulence, and you will form a region in this gas that has a higher density than the rest of them. Now, when you have this higher density, you get into a sort of unstable collapse situation where this dust will attract the dust around it and will become massive. And because it became massive, now it gravitates more. So it will attract more gas onto it. And this process keeps happening, and you'll have sort of a self-gravity collapse. Okay. And as this collapse, the gas becomes more and more condensed, more and more compact. And you come to a state where the inner part of this gas ball that has been formed is in high enough density that it starts to heat up. So this stage where you have sort of this little core that is becoming hotter and hotter and is kind of surrounded by a bigger sort of gaseous, not so tightly bound gas, this entire thing is what we call as a protostar. So this is like a baby star. Now this star is going to grow. So what happens is so once you have some matter, so always remember that when you have some matter, it is easy for it to collect more matter. This is how almost all the astronomy works. Okay, so this is like the core principle that happens. So when these protostars start getting more gases around and they become bigger and bigger, so the inside is pushed or like compressed more and more. You have more and more heat that is getting generated. And at one point, the heat generated is enough to fuse atoms. So generally, you just see that the atoms are fusing, and this fusion is a very exothermic reaction, as in it generates a lot of heat. And this is how the stars glow. This is the fuel for the stars, like taking two smaller atoms and putting them together to make a big one. This is what a star does when it glows. Okay, so when a protostar starts doing this, this is when you call it as a star. One thing to remember about a star lives as long as, so there are two very important processes that happen that happen in a star to keep a star stable. So because the star is heavy and has a mass, there is a gravitational pull that wants to collapse the star inwards. At the same time, because it's very hot and it has all of these exothermic reactions, there is sort of the heat generates this kind of a pressure, radiation pressure, that's what we call it, a pressure essentially. Just think of it as something that's hot tries to push things apart, right? So that tries to push it apart. As long as this pull of gravity and this push that is generated because you're generating heat is able to counterbalance each other, the star is stable and it lives. But now let's talk about death of stars, because this is where you have yes. Sorry to break your flow, Sweta. I just मैं बस पूछना चाहता था कि क्योंकि ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग था और काफी सारा कुछ हमको सीखने मिला एक स्लाइड में, तो ये सबको क्लियर है? दैट्स आई जस्ट वांटेड टू वो मेक श्योर करना चाहता हूँ. किसी को कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड पे? और अगर किसी को अगर चाहिए तो मैं हिंदी में रिपीट कर सकता हूँ, इफ अगर आप में से कोई भी चाहे तो. आई थिंक एक बार अगर एक बार हिंदी में रिपीट जस्ट एक बार समरी अगर बोल दे तो आई थिंक थोड़ा बेटर, थोड़ा हेल्पफुल होगा.
स्टूडेंट के लिए हाँ, हेल्पफुल रहेगा। समराइज क्या बोल रहे हैं देवेंद्र जी? सर हम लोग तो समझ पा रहे हैं आपने क्या बोला, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं वो नहीं समझ पाते, तो उसको समराइज हिंदी में कर दीजिए। मैं ठीक, बहुत हाँ, सही बहुत रहेगा, हाँ। बहुत छोटा सा मैं समरी कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि गुड, स्टूडेंट्स गुड। समझे, यही हम चाहते हैं। हाँ, तो हाँ, ये अच्छा बेसिकली आइडिया है, हाँ। श्वेता जी यही बोल रहे थे कि स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं। तो जो होता ये है कि एक स्टार्ट होता है एक बहुत बड़ा, मतलब क्लाउड होता है, एक डस्ट का, मतलब धूल जो है, हम जो धूल देखते हैं उसी टाइप का धूल है जो वो स्पेस में रहता है, बट वो बहुत ज्यादा होता है अमाउंट में, बहुत ज्यादा। जब गैस और क्लाउड और धूल एक साथ आते हैं तो उनके मोशन की वजह से वो जो ग्रेविटी होती है, बिकॉज वो इतने ज्यादा है, तो उनका जो अपना ग्रेविटी है, अपनी ग्रेविटी के लिए वो ज्यादा और भी एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं और एक दूसरे के पास आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, तो एक टाइम के बाद वो इतना क्लोज आ जाते हैं और उनका जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है, वो सेंटर में एकदम उतना बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका इतना गर्म हो जाता है कि वहां पे जो हम बोलते हैं फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन यानी कि जब कोई भी दो एटम को हम अगर बहुत बहुत फोर्स के साथ या टेम्परेचर और प्रेशर के साथ एक दूसरे से मिलने के लिए अगर मजबूर कर देते हैं, तो वो होता है फ्यूजन प्रोसेस, बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वो स्टार्ट हो जाता है एकदम, वो जो बड़ा जो गैस क्लाउड लेके हम स्टार्ट किए उसके एकदम सेंटर में, एकदम कोर में, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर है, इतना ज्यादा वहां पे मटेरियल है एकदम टाइटली पैक किया हुआ, तो वो फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तब भी स्टार एनर्जी एमिट करना चालू कर देता है, वो लाइट एमिट करना चालू कर देता है, वो लाइट देता है, एंड तभी उसको हम बोलते हैं कि चलो स्टार बन गया, ये मतलब एक स्टार पैदा हो गया। प्रोटोस्टार मतलब जो स्टार बनने वाला है, और जो जब वो हो गया, वो फ्यूजन जब स्टार्ट हो गया, तब हम उसको एक्चुअली स्टार बुलाना चालू करते हैं। और ये स्टार तब तक सॉर्ट ऑफ जिंदा रहता है जब तक वो जो उसके अंदर जो फ्यूल है, जो हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे बहुत गैसेस हैं, जो वो बर्न करता है वो फ्यूजन में, वो जब तक वो बर्न करेगा तब तक वो सरवाइव कर पाएगा, तब तक वो स्टार रहेगा। क्योंकि हमेशा स्टार का जो मास है वो अपने आप को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करी है ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए हमको कुछ और एक फोर्स चाहिए जो कि बाहर की तरफ पुश कर रहा है, राइट। अगर सिर्फ अंदर की तरफ फोर्स है तो वो तो कोलैप्स हो जाएगा, वो तो फिर इमीडिएटली मर जाएगा। तो वो जो अंदर की तरफ फोर्स ग्रेविटी कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए बाहर की तरफ भी फोर्स हो रहा है, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये जो रिएक्शंस चल रहे हैं, ये सब बाहर की तरफ फोर्स दे रहे हैं। तो ये अंदर वाला और बाहर वाला फोर्स जब बैलेंस हो रहा है तब तक स्टार जिंदा है, तब तक स्टार वो अपना स्टार का काम कर रहा है, तब तक वो लाइट दे रहा है। तो जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तभी स्टार उसके बाद कुछ और मोड़ ले लेता है, तो उसका लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है। तो वही श्वेता जी अब बोलने वाले हैं। तो मेरा मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी, कि ये जो इमेजेस है ये सब स्टार्स के हैं? Nay, so this one you see over here, this is a nebula. This is a gaseous nebula, which is like the starting point of the star. In this nebula, a small section will look like this, where you have a small thing, a small sort of seed density that has formed and is now gathering the gas. The one तो below, ये इसके अंदर का है, मतलब जूम इन वर्जन है उसका? yes, it will be exactly. It's अच्छा, like ओके। a nebula will have many such centers. Like in one nebula, you'll have many star formation. So this is like one star forming, right? Then it becomes a protostar, which is the one that is the redder block thing, and then you finally get a star. So a lot of this is just like artist impressions. I think only the first one, which is an Orion nebula, is a Hubble actual image. Yeah. Last one, fourth वाला भी I think actual image वो ईसा का। हाँ, fourth वाला भी actual image, exactly. It's also a Hubble image. The other two are just artist impression, but I think they're very nice. Okay. So, shall I move forward? I have a question. Yes, of course. Actually, the question is about nebula. When we see nebula, different nebula, like it has many of colors, like very attractive colors. So what is the phenomena behind this?
So we will talk about nebula in like 2 slides down. Okay. So we have a slide for nebula. Actually, it attracts me more. Like someone is greenish, someone is bluish, someone is reddish. So what phenomena behind this? Actually, I curiosical about it. एकदम शॉर्ट में एक लाइन में आंसर दे देता हूँ. वो डिपेंड करता है, वो जो कलर होता है कितना अट्रैक्टिव होगा, क्या कलरफुल होगा, वो डिपेंड करता है वो नेबुला किस चीज से बना हुआ है, कौन सा गैस उसमें ज्यादा है, कौन सा तरीके की गैस उसमें कम है. ये एकदम शॉर्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का. और अभी जो ऐसे श्वेता जी ने बताया, 2 स्लाइड बाद हम नेबुला के बारे में बात करेंगे, तो आपको थोड़ा डिटेल में आंसर मिल जाएगा. Can I say something, sir, please? हाँ बोलिए. Can I say something? बोलिए About बोलिए. the color of nebula? I think when the star's light passes through the nebula and it is scattered in different color of light. So nebula looks colorful. I think so. हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत एकदम सही बोले आप. ठीक है, चलो आगे बढ़े. Just like rainbow. Oh, Yes. अच्छा, हाँ हाँ सही बोले, just like rainbow. हाँ, right. Okay, so let's talk about death of stars. Okay, all right. This is problematic. Okay, so stars start with a nebula that we just talked about, where there's a gaseous cloud where you form the stars. So now there are 2 possibilities. Okay, there is 2 possibilities now. You can either form stars, you can have different masses for the stars. So generally you can classify the stars as stars that have high mass and the stars that have low mass. And the way we classify this is more or less depending on what they become when they die. Okay, so what we were talking about, the stars which are balanced between the fusion radiation, so the radiation given out by fusion that is counterbalancing the gravitational collapse. This is a stage of a star's life that we call as main sequence. Okay, so like everything else, stars evolve. Stars have, you know, a sort of a track for their life to be in. And this stage where the star is like the way you expect a star to be is what we call as a main sequence star. Once you go through a stage when the star has consumed all of its element and it can no longer fuse it, right? And what it means by no longer fuse, it depends on what its mass is. Okay, so depending on what its mass is, it can produce certain amount of heat inside, and depending on how much heat it produces, that is what determines how much it can fuse stuff. But once it's ran out of fuel to fuse, then it becomes into something called a red giant. Okay, and the stuff that is very dramatic comes after that, which is if you have a small star. By small star I mean stars like sun. So sun is relatively a small star for us. Okay, it undergoes something, it can undergo either a thing called planetary nebula, and it will give rise to something called a white dwarf. We will go through this in the next slide in more details. I'm just going to outline in this slide. But if you have a heavy star, then it goes through this sort of a very dramatic explosion. And these explosions are very, very energetic. They're so bright that sometimes they will outshine the galaxy for a few seconds. And this is called a supernova. And once you have a supernova, you can either have a bizarre star called a neutron star or a black hole. Okay, so now we go to the first sequence where you have a little star that has exhausted all of its fuel. It has become a red giant. Now, when it's become a red giant, it's sort of an unstable star. It starts because it does not have
fuel to sort of fuse things in. Generally, mostly what happens is when you have a star like sun, they can make up to carbon or oxygen, but after that they are not hot enough to fuse, oxygens together. Okay, so at this point they can no longer produce energy out of fusion, but they're large enough that their gravity is pulling them inwards, so they're sort of collapsing. But as they collapse, they'll sort of heat up a little bit more, and they might be able to sustain a little bit longer of fusion, so they'll expand and they'll contract. So this process of pulsation happens. Now, what happens with this pulsation is it drives something called a stellar wind, because when the matter is doing all of this, there is a sort of a stellar wind that blows. And when this happens, it blows the outer layer. So the outer layer that is the least gravitationally bound surface, this gets blown off. And this is what gives you that sort of, when you look at these pictures, you see this sort of a gaseous halo stuff, right? So this is where that halo comes from. This is the blown off outer shell of a star. And inside you have a tiny, very compact core left. And this is what we call as a white dwarf. Now this white core, this white dwarf, or this little core that is formed, this is very, very hot. And generally it glows in the UV radiation. What this does is it produces enough light to sort of light up that entire gas cloud that that has been formed because of the blown out outer shell. And this is where you see that beautiful glow that you see. This is what Shashiji was asking. Where do you find these? They look very impressive. How do they get their colors? This is where it comes from, because they have sort of a very hot glowing object in the center that is sort of illuminating it, and it is also illuminating it in UV, which means it will ionize this shell of the gases. And an ionized shell of gas always is very colorful, because it gives, you have all of these atomic transitions and stuff, so you can see a lot more colors in them. So this is what planetary, so this phenomena is called as planetary nebula. Okay, so this is what is the glowing death of little stars. So our sun is what we consider a small star. So this is going to, in billions of years down the lane, will have this planetary nebula, and it will form into this little white dwarf. And this is how we expect our sun to die. Okay. So now I think Oyon, अगर I was going to ask कि किसी को कुछ डाउट है कि नहीं, क्योंकि 2 स्लाइड्स के बाद आई थिंक हम स्लोली लेते हैं, एंड लेट्स मेक श्योर कि कोई किसी को डाउट है कि, या फिर अगर आसानी होगी कि मैं लास्ट 2 स्लाइड जल्दी समराइज कर दूं हिंदी में, ऐसा क्या मानना है आप लोगों का? देवेंद्र जी, शशि जी, स्टूडेंट्स, समराइज कर दो ना, because I think it is clear. I can go back and I think that was only a ray diagram, so I think everyone understand it. And it is a very small slide like planetary nebula. I think Devendra sir can explain better to the students. मैं फिर भी बट जल्दी से समराइज कर देता हूँ। श्वेता, I think Oyon एक बार कर देने से अच्छा। मैं प्रीवियस स्लाइड में पूरा समराइज कर देता हूँ। कैन यू श्वेता, कैन यू प्लीज गो बैक टू द फ्लो चार्ट स्लाइड? या, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टार्स का डेथ कैसे होता है, राइट? कि पहले 2-3 स्लाइड पहले हमने बात किया कि स्टार्स पैदा कैसे होते हैं, वो बॉर्न कैसे होते हैं। तो एक बार वो अपना जो इंटरनल जो फ्यूल जो जला रहे हैं, जो हाइड्रोजन जला रहा है या फिर हीलियम जल रहा है स्टार के अंदर, जो उसको इतना ऊर्जा दे रही है, इतना रोशनी दे रही है, तो वो जब खत्म हो जाता है तब स्टार्स बेसिकली उनके डेथ की तरफ बढ़ते हैं। बट वो कुछ डिफरेंट तरीके कैसे हो सकते हैं। हर स्टार का एक ही अंजाम नहीं होता है, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्टार कितना बड़ा था या फिर कितना छोटा था, वो अलग अलग तरीके का उसका जो रास्ता चुन लेता है। तो यही है पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 ब्रांच है, एक है जो मेन सीक्वेंस स्टार बोलते हैं हम लोग, मतलब नॉर्मल स्टार मान लीजिए, जो एवरेज स्टार है, वो जब अपना जो फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो रेड जायंट बन जाता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लाल हो जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, फूल जाता है।
राइट। और उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट अगले स्लाइड में श्वेता ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है। मतलब वो अपना जो आउटर शेल है, अंदर का फ्यूल खत्म होने के बाद वो जो एकदम एक्सपेंड करके 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 जो आउटर शेल है वो एकदम एक्सप्लोड करके उसको एकदम निकाल देता है, उसको छोड़ देता है। और जो अंदर जो रह जाता है एकदम टाइनी, जैसे ये व्हाइट डॉट दिख रहा है ना आपको प्लैनेटरी नेबुला के अंदर, वो व्हाइट डॉर्फ स्टार बोलते हैं हम। तो बेसिकली वो उतना अभी न्यूक्लियर फ्यूजन वो जब वो सब बर्निंग वर्निंग नहीं कर रहा है, उसका जो अपना जो शेल था वो बिखर गया बेसिकली, और वो बिखर के वो नेबुला बन जाता है, वो कलरफुल नेबुला जिसके बारे में बात कर रहे थे। दूसरा तरीका हो सकता है अगर स्टार शुरू से बहुत हाई मास स्टार है, मतलब वो अगर बहुत बड़ा स्टार है, राइट, बहुत हैवी बहुत भारी स्टार है, तो वो जाके बनता है जब वो अपने डेथ की क्लोज आता है तो वो बनता है रेड सुपर जायंट। तो और भी ज्यादा लाल, और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और भी ज्यादा फूल जाता है, और फिर वो जब एक्सप्लोड करता है वो एकदम सुपरनोवा जो बोलते हैं हम उनको, तो वैसा एक्सप्लोड करता है। मतलब एकदम पूरा जितना उसका एनर्जी था, जितना जो मैटर था, वो एकदम पूरा आसपास बिखर देता है एंड बहुत ज्यादा लाइट एमिट करता है बहुत ही कम टाइम में, इसीलिए हम उसको सुपरनोवा बोलते हैं। तो वो जाके इवेंचुअली आइदर वो न्यूट्रॉन स्टार हो जाता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो एक तरीके का स्टार है, और या तो वो ब्लैक होल हो जाता है, और ब्लैक होल के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली समरी में ऐसे 2-3 रास्ते होते हैं जैसे स्टार अपने एंड तक पहुंचते हैं। Okay, very nice. So these are some pictures of planetary nebula. These are like very famous planetary nebula, I think, except NGC 3132, everything else is Hubble. I think the last one is James Webb. So yes, they are very dramatic, they're very beautiful. The first one is called a butterfly nebula, which I really like looking at. Okay, so this is a bunch of really pretty pictures. जो हम थोड़ी देर एक मिनट ये प्रिटी पिक्चर्स में रह के एकदम बात करते हैं। तो वो जो कलर की जो आपने क्वेश्चन पूछा था खुशी जी, वो आपको क्लियर हुआ आंसर, या फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, या फिर हम एक्सप्लेन करें कि कलरफुल क्यों होता है, जो नेबुला के हम फोटो देख रहे हैं वो कलरफुल क्यों होता है, वो क्लियर हुआ? एंड एक बार और करिए, मतलब लाइक जरूर। मुझे लगता है कि कुछ गैसेस हैं, चलो ठीक है, वो बर्न हो रही है और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसके अंदर से बर्स्ट हो रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अब एकदम सही सही बताएं। तो क्या होता है, गैसेस जो बर्न करने की बात हम कर रहे थे, मैं और श्वेता जी से बोल रहे थे, वो होता है स्टार्स के अंदर जब रहता है गैसेस, तब वो बर्न करने की बारी आती है। ये जो है ये सब स्टार्स के बाहर, ये ऐसे बिखरे हुए स्पेस में, तो ये गैसेस बर्न नहीं हो रहा है टेक्निकली हम देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि नेबुला के अंदर बीच में कहीं पे स्टार्स है, प्रॉपर नॉर्मल स्टार्स है, अभी भी वो जल रहे हैं, अभी भी वो लाइट दे रहे हैं। तो उस स्टार का लाइट जब आसपास के नेबुला में गिरता है, तो नेबुला क्या है, नेबुला बेसिकली एक क्लाउड जैसा है। जैसे कि हम आसमान में अगर देखें तो जैसे क्लाउड दिखते हैं, नेबुला बेसिकली सेम चीज है, बट उसका फॉर्मेशन अलग है। वो हाइड्रोजन होता है, उसमें हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस से बना होता है, बट बेसिकली वो दिखता है ऐसे क्लाउड जैसे है। तो क्लाउड के अंदर अब मान लीजिए आप अगर एक लाइट बल्ब रख दें, तो वो लाइट बल्ब का जो रोशनी है वो क्लाउड पे जाके गिरेगा, तो वो होता है। बट उसके बाद वो रोशनी किस कलर बन के हमारी तरफ आएगा, वो डिपेंड करता है वो क्लाउड किस चीज से बना हुआ है। वो इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि क्लाउड जिस एटम से, या मान लीजिए जिस एलिमेंट से बना हुआ है, तरह तरह का जो एटम है, डिफरेंट एटम डिफरेंट लाइट, डिफरेंट कलर में लाइट छोड़ते हैं, डिफरेंट कलर में लाइट एमिट करते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एमिशन, राइट। तो हम बाद में आई थिंक वीक 6-7 में हम इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट शॉर्ट में ही है कि डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एटम या कौन सा एलिमेंट है आपके गैस में, उस कलर में जो लाइट स्टार से आके गिर रहा है, वो लाइट कुछ और कलर होके स्कैटर होके निकलता है। वो कौन सा कलर होके निकलेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। तो अंदर वाला जो है हाँ जी, जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे ब्लू और ग्रीन है ना, स्पेशली जहाँ पे आप अगर आप देखोगे कि NGC 2818 में there's a lot of green blue region. So this green blue region generally for us astronomers we know that these things are oxygen rich. मतलब इसमें
ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसीलिए वो ग्रीन ब्लू दे रहा है। जबकि अगर आप बटरफ्लाई नेबुला देखोगे, उसमें आपको बहुत कम ग्रीन ब्लू दिखता है। सो इट्स नॉट एज ऑक्सीजन रिच एज इट इज 2818. Ayan, I don't fully know this much, but I think that one is rich in carbon, right? कैन बी कार्बन हो सकता है, और नॉर्मली सल्फर होता है। जो बाहर वाला जो रेडिश ऑरेंजिश वो देख रहे हैं हम काफी नेबुला में, जो रेड लाल ऑरेंज टाइप, उसमें होता है कि सल्फर गैस के थ्रू जब लाइट अगर जाता है वो स्टार का लाइट, तब वो रेड या फिर ऑरेंजिश एमिट करता है। तो ये मतलब ऑब्वियसली इसके बहुत डिटेल्स और बहुत हम करेंगे, कर सकते हैं बाद में, बट शॉर्ट में यही रीजन है। जो एमिशन होता है गैस को जब लाइट आके टकराती है, एंड देन फिर वो लाइट कुछ और कलर बन के निकलता है, डिपेंडिंग ऑन कि गैस कौन सा गैस था और कितना हॉट था। अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम रिच नेबुला देखते हो जहां से स्टार पैदा होती है, राइट, ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये रेडिश कलर की होती है, क्योंकि ये एलिमेंट्स रेड में एमिट करती हैं। सो डिपेंड, मतलब एग्जैक्टली जैसे आयन बता रहे थे, the color of the nebula is kind of a reflection of what it contains, and also how hot their inner core is, and how many stars make up the inner core, like how many white dwarfs, how many stellar objects make up the core, where these cores are placed, along with what is the composition of a nebula. Altogether, this kind of gives you the color and the shape. And also, for instance, sometimes what happens is like, when we say that a star died, right, there are many ways in which a star could die. It could just be, yes, this star just ran out of the gas and it died, but it could also be like when it died, it had another star that was sort of playing with it, right, like that was orbiting around it. So if such things happen, when it blows out, it doesn't blow out radially, it doesn't blow out in a circle. So because there will be another star that sort of drives its stellar wind. And so depending on how it interacts with its surrounding, you can have different patterns formed. Like if you have a binary and one goes one sort of blows up its shell in presence of another star, then you'll have a non-symmetric, like it'll not be around, it'll have a pattern to it. So yeah. Shashiji, is that yes. Chetan, I can relate the concept. Perfect. Okay. Okay, let's go forward then. So now we'll talk about supernovae. This is one of my favorite phenomena, and this is what happens to big stars. So when a star is like bigger than 8 times the mass of sun, these guys undergo something called a supernova. So what is this is, so you have a massive star, and they have so they've burnt a lot of their fuel up, that the fuel is exhausted. Now what happens is it starts to cool, because now it does not have anything to generate the heat, and the pressure drops inside the core. As soon as the pressure drops, gravity is constantly trying to pull it inwards. It's trying to constantly collapse it, right? So now it's going to try to collapse the core. Now these massive stars, unlike the smaller ones could only go up until carbon or maximum oxygen or fusing. But these ones have a core that's hot enough that they can go all the way up until iron. So at the end, what happens is you have a very dense ball of iron core, and it's trying to pull the gases outside into this iron core. What happens is the gases come in, they hit this iron core, and then they bounce back as a shock wave. And it gives out a shock wave. And once this happens, when they bounce back, it explodes the star. And this is one of the most violent phenomena that you see in the universe. It is so bright that sometimes for a few seconds, you can see the amount of energy released from a supernova can be brighter than all of the stars together in a galaxy. Okay, so this process is called a supernova, and you have a huge amount of energy that is released out after this. And then what happens is, now there are two things. You have the gas that has been blasted out,
which forms something called a supernova remnant, which is something like a nebula, but does not have to be it. But essentially, it's a block of gases that are moving out in different directions, and this is what we call a supernova remnant. But inside, the core that was really dense now becomes even more dense because it doesn't have anything to burn. It's collapsed onto itself, and it forms two very ultra compact objects, and two of the most bizarre objects that mankind knows today. Okay, so it can either form a black hole or it can form a neutron star. So we will go over both what a black hole is and what a neutron star is in a bit. I'm just going to show this video where you see how it explodes. Okay, it's a GIF, so it'll keep going for a bit. So this is what happens. So you just blow up the outer shell, and then the core is collapsing into a neutron star in this case. So on the left, you have, this is a very famous nebula. It's called the Crab Nebula. And this is a supernova remnant nebula. So nebula is generally just a collection of dust that has sort of some illumination coming from some light somewhere. Okay, so yes, it is, you form planets in the nebula. Nebula is what happens when the stars die, when supernova happens. So this is one of the famous nebula where you see it as a remnant of a supernova. It's called a supernova remnant. This is a Hubble telescope picture. And on the right, you have, you can't really see it. So there's a magnified thing which says SN 2014J. So it's a small piece where they have captured a supernova while it was exploding. Now this is a very, how do you say, this is a huge deal, because capturing a supernova when it is actually going off is like capturing a firework when it is happening. So it's a very complicated process, or like you have to be very lucky to be able to do this. And in this particular case, Hubble has managed to capture a ongoing supernova. So that is what it is. Ayan, do you want to summarize this? Exactly, मैं वही बोलने वाला था. तो इसके बारे में मैं थोड़ा जल्दी समराइज कर देता हूँ. तो जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे, वो जो स्लाइड में हम दो तरीके के पाथवे दिखाए कि स्टार कैसे अपने एंड तक जा सकता है. वन ऑफ एक पाथवे था कि वो सुपरनोवा हो सकता है. तो सुपरनोवा होता है जब बहुत ही बड़ा स्टार, बहुत ही ज्यादा उसमें अंदर मास है, वो जब उसके जो अंदर वाला जो फ्यूल है, जो जितना सारा उसका गैस था, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, उसके बाद जो भी गैस उसने डेवलप किया अंदर, वो सारा जला दिया, सारा खत्म कर दिया. जैसे कि हमारा जो जब गाड़ी चलाते हैं उसको जैसे फ्यूल लगता है, ऐसे स्टार्स को भी स्टार्स रहने के लिए उनका अपना फ्यूल लगता है. वो फ्यूल है ये सब जो गैसेस. तो वो जब फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो अंदर जो उसका फायर जल रहा था, मान लीजिए, तो वो फायर बुझ गया. तो अगर फायर जब बुझ गया तो वो जो फोर्स जो बाहर की तरफ पुश कर रही थी, जो ग्रेविटी को बैलेंस कर रही थी, अब वो फोर्स नहीं रहा. तो अब ग्रेविटी एकदम से उसको पूरा मतलब कंप्रेस कर देता है, एकदम से उसको बहुत ही छोटे जगह पे आने के लिए मजबूर कर देती है. उसके बाद उसके हिसाब से फिर क्या होता है, फिर जो डेंस हो गया, वो जो टाइटली पैक्ड हो गया चीजें वहां पे, तो फिर से दोबारा उसका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से दोबारा वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है. तो ऐसे थोड़ा ऐसे अंदर बाहर थोड़ा होता है, और फिर इवेंचुअली वो एकदम बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही ग्रैंड तरीके से, बहुत ही बड़ा तरीके से एकदम एक्सप्लोड हो जाता है. जैसे हम एक्सप्लोजन देखते हैं, वैसे ही एक स्टार जिसके अंदर इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा उसके अंदर गैस है, इतने सारे जो भी एलिमेंट्स है, वो सब कुछ बाहर फेंक देता है. उसका एकदम छोटा सा एक कोर अंदर एकदम बिल्कुल रह जाता है. वो या तो ब्लैक होल बन जाता है या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है. वो हम बाद में बात करेंगे कि ये सब क्या चीजें होते हैं. बट जो बाहर जो आता है, जैसे कि हम, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड श्वेता प्लीज, तो हम बाहर ये जो एनिमेशन में या फिर ये फोटोज में हम देखते हैं, जैसे कि एनिमेशन में देख रहे हैं कि वो बाहर जो शेल हो गया, राइट, तो वही वो पूरा एकदम एक्सप्लोजन में निकाल देता है, बाहर निकाल के फेंकता है. और वो जो एक्सप्लोजन है, वो जो शेल है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे वो जो फोटोज में हम जो ये शेल्स देख रहे हैं ना, कलरफुल शेल, अंदर खाली है, बाहर एकदम कलरफुल शेल, वही शेल है. तो वो पूरा जो मटेरियल, कभी वो पूरा स्टार के अंदर पैक्ड हुआ करता था, अब स्टार फट गया, तो अभी वो बस ऐसे स्पेस में ऐसे
ऐसे घूम रहा है, राइट? वो हम जब ऑब्जर्व कर पाते हैं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीज होती है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। जैसे श्वेता जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि आप आसमान में देख रहे हैं, और आप लोगों ने कितने लोगों में से टूटता तारा देखा है? देखा होगा किसी किसी ने एटलीस्ट, राइट? बैक ने हाथ उठाया, देवेंद्र जी हाथ उठाया। तो वो बहुत ही रेयर होता है, राइट? ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा चलो आज शाम को 8 बजे निकल के देखते हैं, दिख जाएगा टूटता तारा। ऐसा नहीं होता है, वो रैंडम होता है, हमको पता नहीं होता पहले से कब होगा। अगर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लकी फील होता है। तो सुपरनोवा जब कब फूटेगा, कब एक्सप्लोड करेगा, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इतना एक्यूरेटली, ठीक है? तो इसीलिए ये जो राइट में जो इमेज है, वो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअली उसको एक्सप्लोजन होते हुए ऑब्जर्व किया। जब वो उसी तरफ देख रहे थे तभी वो एक्सप्लोड हुआ। तो दैट वाज वेरी लकी। जैसे कि हम टूटता तारा अगर दिख जाए तो जैसे लकी होता है, तो ये भी एक बहुत ही लकी इमेज था कि सुपरनोवा होते हुए लाइव दिखा हमको कुछ साल पहले, आई थिंक 6-7 साल 8 साल पहले। तो यही था। आई थिंक हम लोग 4 मिनट दूर है आवर से, और आई थिंक शशि जी के, एटलीस्ट शशि जी के स्कूल में आई थिंक 2 बजे का शार्प कट ऑफ था, जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम से। तो हाउ डू यू गाइस फील अबाउट कि हम थोड़ा Q&A कर ले बाकी 4 मिनट में, यहीं पे वी कैन फिनिश एंड देन वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आई थिंक सही रहेगा कि अगर अभी जस्ट लाइक अभी तक क्या क्या सीखे एक बार थोड़ा समराइज करके फिर बच्चे से पूछते अगर उनको कोई क्वेश्चन है, नहीं तो अभी के लिए यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। हाँ, श्योर। अग्री, तो टोटली अग्री, थैंक यू। हाँ, तो मैं जल्दी से पूरा समराइज कर देता हूँ। तो हमने बेसिकली सीखा कि एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि देवेंद्र जी और उनके स्टूडेंट्स तक बोले कि आसमान में जैसे बहुत सारी चीजें होता है, स्टार्स होता है, प्लैनेट्स होता है, गैलेक्सीज होते हैं, नेबुले होते हैं, वही स्टडी करते हैं, यही एस्ट्रोनॉमी होता है। इनको या तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलीस्कोप लेके, या फिर हम कंप्यूटर में बहुत सारे कैलकुलेशन करके भी पढ़ सकते हैं, वो थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी होता है। दोनों ही बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो उसके बाद हम थोड़ा स्टार्स के बारे में बात की। स्टार्स के बर्थ से लेके डेथ तक, स्टार्स पैदा कब होते हैं, वो ऐसे जो गैस क्लाउड होता है, नेबुला होता है, उसके अंदर वो मतलब जो कंप्रेशन जो होता है, जो ज्यादा जो जगह पे ज्यादा डेंसिटी होता है, वहां पे स्टार्स पैदा होते हैं। फिर वो अपना लाइफ लीड करते हैं, बहुत सारे रोशनी देती है हमको, एंड फिर इवेंचुअली वो या तो प्लैनेटरी नेबुला हो जाता है फट के, या फिर वो एक्सप्लोड करके सुपरनोवा हो जाता है, फिर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार हो जाता है। तो यही समरी था। तो बेसिकली हमने बहुत ही शॉर्ट में स्टार्स का लाइफ साइकिल, स्टार का जो जर्नी होता है पैदा होने से डेथ तक, तो वही हमने थोड़ा सीखा। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करेंगे। हम क्वेश्चन से करेंगे, बट अगले वीक में हम थोड़ा और जानेंगे कि ये जो स्टार जो ब्लैक होल हो जाता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे हम। मैं बहुत जल्दी से, इफ श्वेता इफ यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, आई विल जस्ट डू अ वेरी क्विक ग्लिम्स ऑफ कि अगले हफ्ते आज हम ये नहीं करने वाले, बट मैं बस दिखाने देना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे और पता रहे। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन शेयर? हाँ, स्टेलेरियम का विंडो दिख रहा है? बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, स्टेलेरियम का विंडो। हाँ, ओके। तो बेसिकली ये जो एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। इसमें आप स्काई को देख सकते हैं कि आप बाहर जाए कौन से टाइम पे, कौन से लोकेशन में क्या क्या प्लैनेट्स दिखेगा, क्या क्या स्टार्स दिखेंगे, आप जूम कर सकते हैं, मून को देख सकते हैं अच्छे से, एकदम बहुत ही डिटेल से। तो ये मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट वीक में। ये बस मैं एकदम बहुत ही ब्रीफली ग्लिम्स देना चाहता था। तो आज के लिए मटेरियल यहीं तक है। तो आप में से किसी का, कोई भी स्टूडेंट्स का या फिर टीचर्स का किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। टेलीस्कोप में शनि ग्रह देखा, बृहस्पति ग्रह देखा और चंद्रमा भी देखा। आपने बृहस्पति और चंद्रमा देखे, यही बोले आपने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या बोले वापस बोलो। चंद्रमा देखा, चंद्रमा बृहस्पति ग्रह देखा। टेलीस्कोप में चंद्रमा देखा, शनि ग्रह देखा
बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हम 5th या 6th वीक में इसके बारे में बात करेंगे कि टेलीस्कोप से कैसे आप अच्छे से देख सकते हैं, कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस। और किसी को कोई पूछना है कुछ? हाँ जी शशि जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, थैंक्स है। ये जो नेबुला वाला कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ है, so I can express this to my students, and thank you for the session, wonderful session, very interesting. Thank you for the feedback. थैंक यू आने के लिए एंड थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हम लोग को भी नहीं आस्ते यार, आस्ते एक्चुअली आज थोड़ा मुझे बताना लग भी नहीं होता है। रहा था कि ज्वाइन हो पाएगा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे यू नो सब इंडियंस इंडिपेंडेंस हैं, डे अभी हो तो रहा है ना हमारे 3 दिन के तिरंगा लिए। अमृत महोत्सव चल रहा है। यस 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 यस, तो वो आज यकीन नहीं करेंगे, पूरा शहर बुलंदशहर सिर्फ ट्राई कलर में था, एंड दैट वाज वेरी रियली रियली ऑसम फीलिंग, यू नो। सारे स्कूल के बच्चे ऑन रोड थे और सभी ट्राई कलर में थे। दैट रियली, यू नो, उस इवेंट का कैंपेन का हिस्सा रही। बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोग इतना इवेंट्स के दौरान भी आप आए, अलग से आपके स्टूडेंट्स आए, अलग दूसरे टीचर्स के साथ, देवेंद्र जी अपने स्टूडेंट्स के साथ आप आए, इतने यू नो बिजी जो वीकेंड है उसमें भी आप आए, यही बहुत बड़ी बात है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि यू नो जब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आते हैं तो हम जो ऐसे शेयर करते हैं हमको भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू आपको आने के लिए, आप सब लोगों को। सर हेलो सर। सर मैं कह रहा था सर, इसके ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सब भेज दिया है, हमारा ये सेशन का रिकॉर्डिंग भेज दिया है। हाँ तो बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग आ जाएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा 1-2 दिन में। राइट। और पिछले वाला रिकॉर्डिंग भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, बट देवेंद्र जी आपको नहीं मिला होगा क्योंकि आप तब नहीं थे ग्रुप में। मैं दोबारा जो पिछले हफ्ते का रिकॉर्डिंग है वो भी दोबारा शेयर कर दूंगा, और आज का जो है वो शायद 1-2 दिन में शेयर सर ऐड करवा दीजिए जी। सर, मेरे को तो ग्रुप में ऐड करवा दीजिए आप। हाँ, शायद आप अभी ग्रुप में ऐड हो गए हैं। मैं एक बार मैसेज करता हूँ ग्रुप में, आप आज देखिए। के क्लास के शुरू में आपको ऐड किया मैंने, आप देख लीजिए। अगर नहीं हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप बताइए, आप शायद को बताइए तो हम वापस ऐड कर देंगे, बट आप अभी ग्रुप में होना चाहिए। मैंने आज ही ऐड किया आपको। Thank you, sir. Thank you, sir. I have so many pictures, beautiful pictures of the celestial bodies from my telescope and my school's telescope also, and my students also how to operate the telescope very well. Some of them can teach others to operate the telescope. हाँ, वेरी गुड। आई थिंक हम लोग ऐसे सेशन करेंगे जहाँ पे कोई आप लोग दिखा भी सकते हैं इमेजेस। मैं एक्चुअली यही बोलने वाला था कि आप में से अभी भी जो भी है उनके पास अगर कोई यू नो अच्छा टेलीस्कोप से लिया हुआ या फिर ऐसे ही नॉर्मल कैमरा से लिया हुआ कोई फोटो है, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। हमको देखने में बहुत खुशी होगी, सबके साथ शेयर भी हो जाएगा। Can operate the telescope very well. Nice. And so many other boys and girls also can operate the telescope. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे अभी आस्ते आस्ते ऐसे सेशंस करेंगे जहाँ पे आप लोग टेलीस्कोप से क्या क्या इमेज दिए हैं वो सब भी दिखा सकते हैं। अच्छा होगा। और तब तक देवेंद्र जी आप कोई भी टाइम में फील फ्री, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो आज मैंने ऐड किया उसमें, उस ग्रुप में अगर आपको आपका या फिर आपके कोई स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। मैं श्वेता या फिर हम में से कोई, जब हमारा टाइम होगा हम डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स करेंगे। सेम गोज फॉर यू शशि जी, डेफिनेटली कोई भी सवाल हो तो पूछेंगे। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, एक रिक्वेस्ट है सर, जो आपने पीडीएफ जो आपने शेयर किया था स्क्रीन पर, उसका अगर बुक्स हो, अगर आपके पास पीडीएफ में हो तो सर ग्रुप में सेंड कर दिए ताकि हम स्टडी कर सके और हम अपने बच्चों को अपने स्तर से पढ़ा सकते हैं, ताकि वो हमारी अपनी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक फोल्डर करेंगे हम। हाँ जी श्योर, जरूर। हम एक फोल्डर करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। और डेफिनेटली रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वो एंड अच्छा मैं कर दूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया। श्वेता गो ऑन।
Yeah, so I just wanted to say that for the people that have not been able to be present in this session and are watching the recording, that the WhatsApp group is still available and we will be answering to the questions if you have any based on the recording, right? So please feel free to write to us. Also, this will be posted on YouTube, so if you comment on it, we'll also reply to the comments of it. Yes, very good point. Right, and so even if you are watching and you are not part of a WhatsApp group, we'll still be responsive on the comments of the YouTube, so this should not be a problem. And also, if there is anything else, like how Ayan said, if you have pictures of astronomical objects, or if you have general questions about can we learn more about this other thing, or I don't know, something, we would also like that. And also like any feedback that you have, because this is the first time we are launching this, and so any feedback is also as important as comments and questions to us at this moment, so we can sort of shape things according to what is more useful to people. So yes, so whether you're present here in the session right now with us, or whether you're watching this later, please make sure that you give us feedback, and also tell us any questions that you have, or any kind of comments, including interesting pictures or interesting thoughts on whatever it is. So all of it is welcome. That's what I wanted to say. नहीं Yes. डेफिनेटली बहुत ही सही पॉइंट। सो बेसिकली जो लोग भी देख रहे हैं, ये जब भी देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस है हमारे लिए या फीडबैक है, हम तक पहुंचा दीजिए बेझिझक। एकदम ओके, थैंक यू। Definitely.